Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about a mineral cycle, that is phosphorus cycle. In the previous two lectures, we have discussed nitrogen cycle and carbon cycle. You know that minerals they become available to organisms when they are released from rocks. ये जो minerals हैं ये organisms के लिए तभी available होते हैं जब ये रॉक से या ओर से रिलीज हो जाते हैं। इसमें दो मिनरल साइकिल्स विच आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस टू ऑर्गेनिजम्स, वो है, एक है फॉस्फोरस, दूसरा है सल्फर। आपने सुना होगा, आपको पता है दैट phosphorus is a primary ingredient in fertilizers. अगर हम सेल्यूलर लेवल की बात करेंगे, एट सेल्यूलर लेवल एनर्जी रिच phosphorus containing compounds जो हैं they are primary participants in energy transfer reactions. इसलिए ये जो phosphorus का अमाउंट है in an environment, it can dramatically affect productivity. कहते हैं, देखा गया है, अगर phosphorus abundant होगा, what will happen in aquatic ecosystems, in water bodies particularly? We see abundant phosphorus stimulates lush plant and algal growth. इससे वाटर बॉडीज में प्लांट्स की और एल्गे की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ा नाइट्रोजन साइकिल में, दैट प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. Now, where from this mineral cycle of phosphorus begins? I told you that it is only available to organisms when it is released from rocks and minerals. Therefore, the cycle of phosphorus cycle, it begins when phosphorus compounds leach from rocks and minerals over a long period of time. इनको रॉक्स और मिनरल से लीच होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. यू नो, फॉस्फोरस जो है, जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा, नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटमॉस्फेयर और एयर. सिमिलरली कार्बन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एयर का. इन डिफरेंट फॉर्म्स दे आर देयर. नाइट्रोजन बहुत सारे फॉर्म्स में है, कार्बन जो है बहुत सारे फॉर्म्स में है, लेकिन फॉस्फोरस जो है it has no atmospheric form. It is usually transported through water. अब ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं, they take in inorganic phosphorus, then incorporate it into organic molecules and then pass it on to consumers or heterotrophs or animals through
grazing food chain. I'll repeat some points here. Phosphorus is an important and essential constituent of protoplasm. ये जो rocks हैं या बाकी deposits जो हैं that are formed in past geological ages, जो बहुत हजारों साल 100 साल पहले फॉर्म हुए हैं, particularly deep ocean sediments. It is said that these are the ultimate source of phosphorus. Geological deposits जो हैं, they are the ultimate source of phosphorus. When these deposits are eroded, phosphates are released into the ecosystem. जिसको मैंने अभी आपको बोला, they are leached from rocks and minerals. Then, from autotrophs, this phosphorus reaches to consumers and animals through grazing food chain. Then, excess phosphorus जो है, that's again excreted and again reaches the autotrophs. It is said that seabirds जो हैं, they have played an important role in phosphorus cycle. देखा गया है, there's a place in South America, there's a coast that's known as coast of Peru. नाम आपने सुना होगा, coast of Peru. It's in South America. कहते हैं that there is a vast or fabulous guano deposits are there. अब ये जो प्रोसेस है of phosphorus transfer by birds from sea to land, ये तो एक continuous process है, लेकिन इसका जो रेट है that is very slow. अब अगर हम माइनिंग करेंगे या प्रोसेसिंग ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर करेंगे, उससे भी लोकल लेवल पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है. जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक्सेस फॉस्फेट्स जो हैं, अगर ये पानी में चले जाएंगे, if they are dissolved in waterways, because of increased input from urban, industrial and agricultural waste water, वो भी एक ग्लोबल कंसर्न है. दैट्स अ ग्रेट ग्लोबल कंसर्न. एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स में जो फॉस्फोरस यूज होता है या इंडस्ट्रीज से जो फॉस्फोरस डिसॉल्वर्ड चला जाता है पानी के साथ, फिर वाटर बॉडीज में जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, दैट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, दैट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन.
दिस फॉस्फोरस, अगर हम सॉइल की बात करेंगे, दिस फॉस्फोरस enters the living organism और living systems from the soil, जहां ये एग्जिस्ट होता है in minerals combined with calcium, पोटेशियम, ये कैल्शियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ और आयरन के साथ अटैच्ड होता है, कंबाइंड होता है। और इसमें से ज्यादातर जो फॉस्फोरस है दैट इज टेकन अप बाय वेजिटेशन एंड इट्स अल्टीमेटली रिटर्न टू द सॉइल। And it moves out of the soils in a water soluble form and is transported by waters through rivers and streams again into the oceans। ये फिर चला जाता है ओशंस में। There's an estimate कि तकरीबन 20 मिलियन टन्स, 20 मिलियन टन्स of phosphorus are estimated to leach off from land into the oceans per year। हर साल लैंड से ओशन की तरफ लीच होते हैं 20 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फोरस। That means there is a gradual flow from land to the oceans। इस फॉस्फोरस का फ्लो है लैंड से ओशंस की तरफ। इसी तरह से ये फॉस्फोरस रिटर्न होता है टू लैंड। दैट इज ऑल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यूएसए में एक जगह है फ्लोरिडा, ये नाम भी आपने सुना होगा, बहुत मशहूर शहर है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक मुकाम है, उसका नाम है टम्पा, TAMPA, तम्पा। कहते हैं कि तम्पा के 40 किलोमीटर मशरिक की तरफ there is a valley known as Boone Valley, that is known as Boone Valley। It is situated, I told you, 40 kilometers of Tampa in Florida, USA। कहते हैं कि 15 से 10 मिलियन साल पहले, about 15 to 10 million years ago, Boone Valley was the bottom of a shallow sea where marine invertebrates lived and died। ये एक शैलो समंदर था जहां मैरीन इनवर्टेब्रेट्स रहते थे और फिर वो मर गए। फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस से दिस वैली वाज अपलिफ्टेड, ये ऊपर चली आई और 1880 और 1890 में, in 1880s and 1890s, that is it's late 19th century, in this period there was the discovery of the phosphate ore in this Boone Valley। वहां पर इस फॉस्फेट ओर की डिस्कवरी हुई बोन वैली में। एंड दैट लेड टू अ फॉस्फोरस रश। अब ये वैली जो है, इट इज सेड दैट इट प्रोवाइड्स 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एंटायर फॉस्फेट प्रोडक्शन। दुनिया में जितनी भी फॉस्फेट की प्रोडक्शन होती है, 1/3 हिस्सा जो है वो निकलता है बोन वैली से।
अगर हम यूएसए की बात करेंगे, इट इज सेड कि 3/4 ऑफ यूएस प्रोडक्शन जो है फॉस्फेट की वो बोन वैली से आती